Let's talk about the exception handling topic. So before I hit directly, when I run this 10 by 0 and I have some rest of the code, rest of the main method. So tell me whether this line will be executed. Line number 6 will be executed, right? And like that, if I have multiple lines of, let's say मेरे पास 10,000 lines हैं. Now because of this line, because of this simple uh, line, my rest of the code is not getting executed. So at this point, what happens? This is something problematic because of which our rest of the program is not. तो क्या हो रहा है? Because of this line, rest of the code is not be executed. So what is this? The problematic because of which your program is going to terminate abnormally. Abnormally मतलब without completing rest of the is getting abnormally terminated. The thing. Now this thing I can say this is a problematic situation because of which your program is not going to be completed. So it will abnormally terminate. It will not complete the completion. It will immediately stop. So this situation can occur at lot many times. Occur lot many times. Here. So what is the situation? Divide by 0. What is this issue? This tells that your program is attempting to divide a number which is undefined mathematics and Java as well. Don't need to this. So what I'm trying to say, because of this line, your rest of the program stopped. Rest of the program stopped. Now, this situation is a problematic situation. Because of this, your program terminates abnormally, called as exception. Exception is at an unwanted, unexpected event. Is an problematic because of which your program terminates abnormal or without completing the program. Without that is nothing but exception. What is exception? It is an unwanted, unexpected. We want that to happen. It is unexpected event, problematic event because of program terminate abnormally, and such a situation is called as exception. So what is exception? Exception, it is a problematic situation because of which program terminates abnormal. Now this is not that big deal. We can recover that. Recover means even though there is an issue in this particular program, we can actually recover that. Recover means, what do you mean by recovering the program? Even though such situations occurs, we might recover that. Recover means we can continue the rest of the program execute. Can continue the rest of the program execute. That is nothing but a recovery or handling. What do you mean by exception and exception handling? We'll try to understand. Exception is exception. It is an unwanted, unexpected event, unwanted, unexpected event that terminates the program, terminates the program abnormally. Abnormally का मतलब होता है कि without completing
and exceptions can be recovered. Exceptions can be. And why these exceptions occur? Why these situations occur? Exceptions are occurred. Exceptions are occurred mostly due to developer mistake. Exceptions are occurred mostly developer mistake. Developer logical mistake. Or most developer logical. Now, uh, there is one more concept called as error. So mostly logical errors. What do you mean by logical errors? What might be the logical errors? And we fix that. What are the errors you think that are something uh, dividing a number? अभी आप दो नंबर का डिवीजन के लिए यू कुड एक्सेप्ट कर नंबर वन एंड नंबर टू. अगर आप नंबर टू आपका जीरो वैल्यू है तो योर आउटपुट विल बी एक्सेप्शन. तो डिवाइडिंग नंबर बाय जीरो. अभी आप कोई फाइल में से डेटा कुछ रीड करने का ट्राई कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू रीड द कंटेंट फाइल. तो ट्राइंग टू रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, ट्राइंग टू file, not there. Compile time it was there. Compile time file was there, but at runtime someone did the file. We cannot do it. So this should be something we can fix. Okay. Error. What is error? Error is also unwanted, unexpected event that terminates the program abnormal. And errors cannot be. It will be always be whenever error occurs. It will always be an abnormal termination. तो आप रोक नहीं. Something is bound to happen. एग्जाम्पल मेमोरी खत्म हो गई. एग्जाम्पल मेमोरी खत्म हो गया. आप रन टाइम में तो फिक्स नहीं कर सकते हैं. लाके तो दूसरी मेमोरी ऐड नहीं कर सकते. मेमोरी खत्म मतलब एप्लीकेशन नॉट कंटिन्यू. So these are the errors. Errors means your JVM is out of some issue or you're out of some, there is some. अभी लेट से आपने एक डेडलॉक कॉलिंग इट, वो कभी रुका ही नहीं तो क्या होगा? There will be stack overflow. Stack overflow. So these are mostly errors are caused due to lack of resources. Lack of resources means such as memory. खत्म हो गया तो उसको आप कुछ नहीं. मेमोरी हो सकता है या और भी पावर इशू. देयर माइट बी एनी इशू. errors are caused due to errors are caused due to lack of resources and developer mistakes. Developer is also equally responsible. उसने बहुत ही अननेसेसरी फॉर लूप के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. फॉर लूप के अंदर का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, that is also. So errors cannot be handled. Remember, errors cannot be handled. Exceptions can be handled. ये टॉपिक का नाम क्या है? Can be.
exception? It is unwanted, unexpected. I am not expecting it is also unwanted, but the exception can be handled. Exceptions can be handled. So what do you mean by exception handling? What is exception handling? Exception handling. So preventing the abnormal termination of the program. Exception handling मतलब preventing the abnormal termination of the program. मतलब प्रोग्राम सही से इशू भी आए तो हम उसको completely एग्जीक्यूट कर पाए. So that is nothing but preventing the abnormal termination. That is what we are going to do. अभी हम exception handling क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे इश्यूज. एक इशू की वजह से आप पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं करो, राइट. अभी लेट्स से एग्जांपल, अभी क्लास आना था लेकिन किसी की गाड़ी पंक्चर, तो उसको हैंडल कर सकते थे. गाड़ी पंक्चर हुई तो उसको क्या कर सकते, फटाक से पंक्चर निकाल के आ सकते थे. तो इमीडिएटली नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, कोई रिक्शा कर सकता है, कोई बस से आ सकता है, मांग सकता है. सोल्यूशन है, कैन हैंडल दैट, राइट. बट यू कैन कंटिन्यू द एग्जाम, कंटिन्यू द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, right. So you have a optional ways to handle exceptions. So there will be a lot of exceptions. Program also real life. So how do you handle that is important. How do you complete program, that is. ठीक है. तो अब भी एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हो एंड देयर विल ऑलवेज बी सम सिचुएशन बिकॉज ऑफ विच योर एप्लीकेशन, so you have to take precaution. What precaution? If user is interested zero value, so what will happen? So you can tell him that in value or something, that is nothing. So writing program is equally important as well as handling the exception. Handling exception means bulletproofing your application from different issues causing the, what is application exception, making it bulletproof. Any situation it will sustain. Whatever the issues are there might be, what are the multiple issues, uh, there might be different issues. You're trying to read integer but some string value. How will you handle that? So you can tell him that please the integer value. You can prompt the user or you can handle that situation. So whatever it happens, your program should not stop. Your program should not stop. Now multiple reasons. अभी मुझे क्या करना है, कोई फाइल में से डेटा रीड करना है. So अगर यूजर कोई फाइल देता है उसमें से डेटा रीड करना है, अगर आपने कोई 10 टाइप सपोर्टेड है फाइल रीड करने के लिए, लेकिन एक फाइल सपोर्ट, दूसरा कोई फाइल सपोर्ट नहीं, आप उसको बोल सकते हो कि दूसरा फाइल अपलोड करो या ट्राई टू डूइंग सम अदर फॉर्मेट. तो आपको कोई भी सिचुएशन में आपका प्रोग्राम फेल नहीं होने देना. You will ask n number of questions and you will try to bullet that, right. So how do we handle exception? So how do we make sure that your program does not terminate? How do we will try to understand it also. 3 क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ तक दिखे आपको, एक्सेप्शन, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए आपको एज ए डेवलपर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं. जावा ने ऑलरेडी बहुत कुछ आपको टूल्स दिया है, बहुत सारे मैकेनिज्म का यूज करके आप बहुत इजी तरीके से एक्सेप्शन कर सकते. एक्सेप्शन हैंडलिंग करना मतलब उसको हैंडल करना, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट. अभी लेट से कोई गाड़ी खराब होती है, उसको ठीक करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं. वैसे ही जावा also provides you ready to use some tools using which we can fix the program. So there are a lot of tools Java has provided using which we can easily fix the, right. So what mechanism or what tools Java is providing, we'll try to understand. A high level, we can handle exception. We can handle exceptions using try catch or throws key. इन दोनों का यूज करके आप एक्सेप्शन हैंडल कर, कैन हैंडल द एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई कैच और throws key. These are the two options. So we will later we will be understanding how to handle exceptions using try catch as well as throw. So we'll try to understand this. Before that, I want to tell you some what are the
things are there, what are the tools, mechanisms are there using we are going to handle the exception. So using try, catch, finally, throw and throw. बहुत सारे और भी these are the major keywords, 5 keywords there. We are going to exception. इसके अलावा आपको keywords तो है ही, लेकिन plus they have provided some set of classes also. So they have provided some set of classes also. So what is exception hierarchy? What is exception hierarchy? We'll try to understand this. So hierarchy means it is an hierarchy of classes. What do you mean by hierarchy? Hierarchy of classes. So I will just try to write. So we have this throwable. So throwable is a concrete class. What is this? Concrete class. It is extended by a class called as exception, and it is also concrete class. And exception is extended by runtime. It is also concrete. And there is one more class is error class. It is also concrete. Throwable is the top class, the hierarchy. Throwable is the class in the hierarchy. Exception, error. Throwable is extended by exception and error class. This idea. So there are only four classes: throwable, exception, runtime exception, error. So these are also classes which are also going to help you. Not only this, apart from this, there are n number of other classes. Number of other classes are also there, which are going to help you do the exception. They are also clear. What is the exception hierarchy? This is also one of the questions. Get what is exception? Throwable is the top class. It is extended by exception and error class. Exception is extended by runtime. चार classes है याद रखना. This is also very much important. Now there is one of the thing you have to understand. Now अगर मैं आपको let's say मैं आपको पूछता कि you come to me and you say कि सर मेरा problem solve कर दो. मेरा follow up question क्या होगा? क्या problem? आप फिर से बोलोगे सर मेरा problem solve. So will I be able to solve that problem? So what is the thing? I should know what is the exact problem. What is the issue? What is the problem statement? So that I should. But मैंने बस बोल दिया कि आपने बस बोल दिया कि मुझे प्रॉब्लम है. मैं हाउ डू आई सॉल्व दैट? हाउ डू आई हैंडल दैट सिचुएशन? अभी आप बोलोगे नहीं प्रॉब्लम क्या, तो मैं उसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ? हाउ कैन वी हैंडल दैट? पहले सिचुएशन, पहला क्या प्रॉब्लम, मतलब आपको क्या होना चाहिए? यू शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन वी कैन डिसाइड हाउ टू फिक्स. यू शुड नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो आप बोलोगे मेरा मतलब प्रॉब्लम है मुझे, तो हाउ डू आई नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम? तो उसको क्या फिक्स दे सकते हैं हम? व्हाट वी कैन डू द फिक्स? कैन नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर फिक्स. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो अभी यहाँ पर उसी थ्योरी का मैं यूज करूंगा. अभी जो भी अभी 10/0 था, व्हाट वाज दैट? व्हाट इज दैट सिचुएशन? प्रॉब्लम है, राइट? बट व्हाट इज द प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम इज यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय, दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरर आउट ऑफ बाउंड, वेरी साइज, बहुत सारे नाम सुन। So these are nothing but problem description. What are these? Problem description. And Java has created a lot of predefined classes which denotes a particular set of, जैसे arithmetic exception, इसको देख के आपको समझ में आता है कि ये exception कब आएगा। What is this problem statement? Arithmetic exception का मतलब क्या होता है? This situation denotes that someone is trying to divide by 0. Then array index out of bound exception. What is the situation? What is the problematic situation representing? It is representing someone is trying to access an is not there in the array. Then a negative array size exception, ये उन्होंने क्लास बनाया। ऑल ऑफ दीज में जो अभी नाम बताई, ऑल ऑफ दीज आर क्लासेस, ऑल ऑफ दीज आर क्लासेस। सो फॉर एवरी सिचुएशन देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस व्हाट जावा एक्सपेक्टेड कि ये इतनी सारी सिचुएशंस, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको पता है कि ये सिचुएशन हो सकती है तो आप खुद का भी क्लास बना सकते हैं। तो फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, नॉट मोस्ट, फॉर लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जावा हैज क्रिएटेड अ करस्पॉन्डिंग, but they have done, they have created a corresponding class. So to represent a problematic situation, they have created a class. Null pointer exception. What is null pointer exception? What is null? Value should not be. Null means a reference pointing to nowhere. Null represents that a reference is not pointing to any object. That is null. Now you are having a reference, but that reference is not pointing to any other object. A reference is not pointing to any other object, so it means it is pointing to null. So if you are trying to use a reference which is pointing to null and trying to perform an operation, so let's say you are trying to find the length of a string, not there. तो स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू ए बी सी होगा तो उसका लेंथ आएगा 3, बट स्ट्रिंग एस टी आर और इक्वल टू नल दिया। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप उस रेफरेंस का यूज करके लेंथ फाइंड करना चाहते हो। सो दैट इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है जिसके लिए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के लिए एक करस्पॉन्डिंग क्लास बनाया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट फॉर there are lot of there are lot of classes are defined represent problematic, you know this। ये क्लियर है ये वाला अंडरस्टैंडिंग आपको? नाउ now there are two situations in program. What is the process of Java program? Completion or development. You write the program, then you compile the program, and then you run the program, right? Now you might get exception at the time of compile time, or you might get exception at the time of program execution. Example, अभी आपने कंपाइलेशन के टाइम पे सब कुछ सही है, आपने प्रोग्राम लिखा एक फाइल में से डेटा रीड करने के लिए, क्या लिखा, फाइल में से डेटा रीड करने के लिए आपने लॉजिक लिखा, लेकिन रन टाइम वो फाइल ही गायब है। कंपाइल टाइम एवरीथिंग इज फाइन, सिंटैक्स वगैरह सब सही है, लेकिन जब फोल्डर का पाथ वगैरह सब दे दिया आपने, एवरीथिंग इज देयर, बट रन टाइम वो फाइल ही गायब है। व्हाट विल हैपन? गेट एक्सेप्शन। व्हेन यू विल गेट द एक्सेप्शन? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम चल रहा है और आपको इशू आ गया। कंपाइलेशन के टाइम भी आपको इशू आ सकता है। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन क्या इशू आ सकता है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन अभी आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो क्लास ही प्रेजेंट नहीं है, गेट क्लास नॉट फाउंड। अगर आप कोई मेथड एक्सेस करना ट्राई कर रहे हो, इन दैट मेथड इज नॉट, तो एक्सेप्शन क्या आएगा? मेथड नो सच मेथड एक्सेप्शन।
अगर वेरिएबल ही नहीं है प्रेजेंट लेकिन आप एक्सेस ट्राई कर रहे हो तो आपको मिलेगा नो सच फील्ड एक्सेप्शन। अभी आप कोई प्राइवेट डेटा बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो क्लास के बाहर तो इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन आएगा आपको, राइट। और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो यू माइट गेट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन or you get a problem at the time of program compilation or get you might get the problematic situation at the time of program execution। दो है आपके पास, एक तो compilation के टाइम और दूसरा है execution के टाइम, right। so based on that there are two types of problems which occurs at compile time, which occurs at runtime। तो जो एक्सेप्शंस कंपाइल टाइम आते हैं उनको बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन। क्या बोला जाता है? चेक्ड एक्सेप्शन सी। चेक्ड एक्सेप्शंस ऑकर एट कंपाइल टाइम सीसी। तो दीज आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, इसलिए उनको बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन। और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय अनचेक्ड एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस which occurs at the time of program execution. Such exceptions are called as unchecked exceptions or runtime exceptions which occur at the time of program execution or program runtime. So such exceptions are called as unchecked exceptions or runtime exceptions। समझ में आ रहा है? अभी मैंने अभी इसके पहले एक ऊपर लाइन लिखी। There are lot of classes are defined to represent a problematic situation. Now there will be classes which will represent compile time situations, and there might be some classes which represents runtime exception, runtime problematic situation। अभी दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? और उनको डिफरेंशिएट कि ये कंपाइल टाइम आ सकता है या रन टाइम आ सकता है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आया? रन टाइम। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आया? रन टाइम। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आया था आपको? रन टाइम। कंपाइलेशन के टाइम नहीं आया। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करोगे आपकी कौन सा एक्सेप्शन कब आएगा, कौन सा सिचुएशन कब ऑकर होने वाला है? तो वहां पर उन्होंने सिंपल सा लॉजिक बताया। अगर कोई भी क्लास ऐसा विच एक्सटेंड्स एक्सेप्शन class which extends exception class will be called as checked exception या CC या CE। checked exceptions occur at compile time and checked exceptions extend exception। yeah? Checked exceptions are the classes which extends exception class, and unchecked exceptions are the classes which extends either error class or runtime exception class। So let me tell you this once again। So what are the types of exceptions? What are the types of exceptions? What are the types of exceptions are there? So we have two types of exceptions: checked exceptions and unchecked checked exceptions and unchecked exceptions। checked exceptions और इससे बोला जाता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन को बोला जाता है और रन टाइम एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शंस और कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस, और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। नाउ checked exception, let's try to understand। these are the problematic situations occur at the time of program compilation। कब आता है? compilation। now as you know this about statement, there are a lot of classes defined to represent problematic situations। तो यहाँ पर आपको याद रखना है the classes which extends exception class exception class are called as checked exception, right? Examples of checked exception. For one, we have class not found exception, then
नो सच मेथड एक्सेप्शन, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, फील्ड मतलब वेरिएबल, देन इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, और भी बहुत सारे हैं। अभी ये क्लासेस डिफाइंड है। इफ आई शो यू दीज आर सम क्लासेस, these are some classes. So class not found exception, it is a class, predefined class, which extends reflective operation exception and extends exception class. So class not found exception actually extends a, then no such method exception. You see this class extends reflective operation exception and indirectly ये क्या extend करता है? Now if you see this array index out of bound exception, array index out of bounds exception extends index out of bounds exception and extends runtime. तो ये कब आता है? null pointer exception if you see extends runtime exception. ये कब आता है? runtime tip. So what are unchecked exceptions? So these are the problematic situations occur at the time of program execution. The classes which extends runtime exception or error class are called as unchecked exception. Examples: null pointer exception, arithmetic exception, then we have array index out of bounds exception, then we have negative array size, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं. Getting this idea? What are the different types of exception? There are two types: checked exceptions और unchecked exception. अभी ऐसा उसको समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कब आ सकती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब आ सकता है. एक तो कंपाइलेशन के टाइम और एग्जीक्यूशन. तो हमारी लाइफ में तो कभी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर फिक्स, एक तो कंपाइल टाइम या रन टाइम. तो यहाँ पर दो ही सिचुएशन है जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती. क्लियर है यहाँ तक? हाँ. नेक्स्ट, अभी जो हम व्हाट इज द एक्चुअल, अभी क्या हो रहा है अगर हम ये ट्राई कैश फाइनली थ्रोज नहीं यूज करते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग करंटली, what is currently happening, we'll try to understand. That is called as default exception handling. default exception handling. मैंने आपको मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक बताया था. डिड आई टेल यू मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक मेमोरी एरिया? मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक बताया था. स्टैक मेमोरी इज क्रिएट. मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक, आई टेल यू? यस, आई टोल्ड यू. मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक is also called as stack memory Java to keep track of which method is currently executed. Currently, so main method is calling m1, m1 is calling m, calling m. So all the such methods, let's say method we have main, m1, m2, m. तो methods मेथड के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? लोकल वेरिएबल्स. ये सारे वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर हो? स्टैक मेमोरी एरिया. मेन के लिए एक एंट्री रहेगा, m1 के लिए एक एंट्री रहेगा, m2 के लिए एक एंट्री, फिर m3 के लिए. फिर m3 जैसे ही कंप्लीट होता है, मेन मेथड कॉल्स m1, उसका एंट्री ऑन टॉप में आ गया. फिर m1 कॉल्स m2, उसका एंट्री एक टॉप में आ गया. फिर m2 कॉल्स m3.
M3 के रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स हो उस एरिया में रहेंगे, M2 के उसके एरिया में, M1 के उसके एरिया में, मेन के उसके एरिया में। अभी जो भी मेथड जो भी एंट्री ऑन टॉप है दैट मीन्स दैट मेथड इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, so this method execution stack is used to keep track of method calls. What is the currently executing method? Each time method called, a new block is added or pushed, a entry is added on top of the stack. So this block contains local variables and data specific to that particular method. तो मैंने अभी 4 मेथड लिखे, मेन, M1, M2, M3। तो मेन के अंदर जो भी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे वो कहाँ पर होंगे, मेन के एरिया में। उसके टॉप पे कौन टॉप पे आएगा, M1, M1 के टॉप पे M2, M2 के टॉप पे M3। तो अभी उसको देख के समझ में आता है कि व्हाट इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग मेथड, M3। M3 कंप्लीट हो गया, दैट पर्टिकुलर एंट्री विल बी डिलीटेड। M2 कंप्लीट हो गया, दैट विल बी डिलीटेड। M1 कंप्लीट, डिलीट। मेन कंप्लीट, डिलीट। तो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपका पूरा that stack memory will be completed. The top block on the stack represents currently executing method, and when this method is finishes executing, the block is removed or popped out. Stack में दो entry होता है, push मतलब add करना, pop मतलब remove कर देना। It is popped from the stack and control goes back to the caller method, जिसने भी calling method, which becomes the new top of the stack। मतलब main ने call किया M1, M1 ने call किया M2, M2 ने call किया M3। तो M3 मेथड कंप्लीट हो गया, उसका जो भी स्टेटमेंट्स है, दैट एंट्री विल बी पॉप्ड आउट, दैट विल बी रिमूव्ड, एंड हु इज द टॉप ऑफ स्टैक, M2 कंप्लीट हो गया, M2 भी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। हु इज द नाउ एग्जीक्यूटिंग मेथड, M1। M1 की सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए, रिमूव्ड। के नीचे फिर मेन कंप्लीट हो गया, दैट इज एंड ऑफ योर प्रोग्राम, एंड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन योर स्टैक मेमोरी विल बी empty, which becomes the new top of the stack, and this process continues till there are no methods or blocks left on the stock, indicating that all the methods have finished executing and program। तो ऐसे आप देख सकते हो, method A के local variables, method B के, method C के, like this। So in the sequence, which method will be executed first? Method A calling method B calls method C will be completed, that will be deleted, method B and method। Okay, so I will just do this। तो ये बताने का रीजन क्या है, आपको एक आपने बहुत फेमस एरर सुना होगा आपने एक, व्हाट इज दैट? अभी मेन मेथड कॉल करता है M1 को, आई विल जस्ट क्रिएट M1 एंड M1 कॉल्स M2, M2 कॉल्स M3। और फाइनली यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ M3, आई विल जस्ट ऐड द बक्स। अभी ऑन टॉप ऑफ पर कौन सी मेथड है, व्हाट इज द करंटली एग्जीक्यूटिंग मेथड, मेन, राइट? तो मेन इज कॉलिंग M1, तो टॉप पे कौन आया अभी, M1, M1 कॉल्स M2, टॉप पे कौन आया, M2, M2 कॉल्स M3। तो M3 अभी देखो स्टैक आपका मेन ऑन टॉप ऑफ M1, M1 के टॉप पे M2, M2 के टॉप पे M3। जैसे M3 मेथड कंप्लीट होगा, देखो अभी यहाँ पर M3 मेथड कंप्लीट, जैसे ही M3 मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, दिट विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। अभी कंट्रोल किसके पास है, M2 के पास। अभी M2 कंप्लीट हो जाएगा तो M2 विल बी आल्सो रिमूव। फिर कंट्रोल आया M1 के पास, M1 इज आल्सो कंप्लीट एंड M1 इज आल्सो डिलीटेड, एंड मेन मेथड कंप्लीट्स, इज एंड ऑफ योर सी नॉलेज को आगे लेके जाते हैं। नाउ main is calling main, main is calling, what will happen, what is happening, main calls, main calls main,
अभी देखो यहाँ पर पहला एंट्री किसका है, मेन, फिर से कॉल किया उसने मेन। अभी ये चलता रहेगा आपका स्टैक, देखो अभी ये स्टैक में एंट्री किसकी है, ये कब तक चलेगा। हम्म। अब ये चलेगा कब तक पता है, कुछ टाइम के बाद आपका स्टैक मेमोरी हो जाएगा फुल। क्या हो जाएगा, स्टैक मेमोरी हो जाएगा फुल, और आपको मिलता है एक एरर कॉल्ड एज स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर क्या होता है, जब आपका स्टैक मेमोरी एरिया होता है आउट ऑफ, तब आता है आपको स्टैक ओवरफ्लो। दिस इज अ एरर, cannot recover back now, this will stop the process, आप रिकवर नहीं, called as stack overflow error। तो stack overflow error कब आता है, can you tell me। stack memory आउट ऑफ होती है, तो stack memory कब आउट ऑफ होती है, there might be n number of, there is really deep or possibly infinite or recursion occurs when method calls itself. It usually happens when there is no exit point or terminating condition defined in the recursive function. From the stack trace provided, the main method is repeatedly invoked without any termination condition, which constitutes infinite recursion. This results in each call of main method। तो stack मतलब हर बार main calls main, फिर top पे main, ऐसे continuously जा रहा है। So to resolve this issue, you should ensure that recursive calls have a clear terminating condition। मतलब कब कभी ना कभी तो स्टॉप होना चाहिए। एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये लूप 10 टाइम चलना चाहिए बस। आई कैन से दैट मेन मेथड शुड कॉल इटसेल्फ 10 टाइम्स, और उसके बाद आप इसको स्टॉप कर सकते, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो तो मेन। अभी फिर भी पता है आपको ये कितनी बार चलेगा, ये फिर भी अभी भी इनफाइनाइट है, क्यों, कैन यू टेल मी। ईच वन इज गोइंग टू कॉल 10 टाइम्स, ईच वन इज गोइंग टू कॉल टाइम्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक स्टैटिक वेरिएबल ले सकते हो, तो आप स्टैटिक बना सकते हो, तो आप बना सकते हो स्टैटिक। अब कितने बार चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप टू रन। हाँ, तो ये कितने बार प्रिंट होगा, टेल मी। तो फर्स्ट टाइम लूप हुआ, मेन मेथड विल बी कॉल्ड आई जीरो, अगेन आई प्लस प्लस, लाइक दिस, कितने बार कॉल होगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कॉल होगा, और फिर 11th टाइम आपको ये प्रिंट होगा। तो ये लाइन कितने बार प्रिंट होगा, ये लाइन कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार ही प्रिंट। क्यों, कैसे स्टॉप करोगे आप इसे। अभी उसने मेन कॉल किया कितने बार, मेन कॉल किया उसने, फिर आई का वैल्यू कितना बना, वो आई प्लस प्लस हो ही नहीं रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, कैन यू टेल मी। आई प्लस प्लस हो रहा है क्या इधर, देखो यहाँ पर आई का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है क्या, नहीं, राइट। क्या कर सकते हो आप इसको आई प्लस प्लस दे सकते हो, आई प्लस प्लस नहीं दे सकते आप इसको, इनपुट आप इसको दे सकते हो ऐसे, न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर आप दे सकते हो आई
ये आई प्लस प्लस कब होगा? कैन आई डायरेक्टली राइट आई प्लस प्लस यहाँ पर? कैन आई राइट दिस करते? नाउ टेल मी, कितने बार चलेगा अभी? अभी भी नहीं हो रहा है कि मेन इधर से कॉल हो रहा है और फिर इधर से ही आपका, तो ये नहीं चेंज हो। हाउ हाउ डू आई स्टॉप दिस? नॉर्मल फॉलो है। अच्छा, चलो, दिस इज नॉट द माई कैंसर, बट यू गॉट द आइडिया व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो जब एरर आता है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। So what I'm trying to explain you, I am trying to explain you what is default exception. So errors are something we cannot handle or we cannot recover. We are talking about exceptions. We are talking about exception. 10 by, I'm doing 10 by 0 and I have this line rest of the main. So what is happening right now? Now this line will not be executed. This particular line number 6 will not be executed. So what is happening currently? What is default exception? And you get this divide by 0. ये होता क्या है? What actually is? What is happened just now? What you see on the screen? It has saying you there is an exception in thread main java.lang arithmetic exception divide by 0 at पैकेज का नाम दिया है एंड द क्लास नेम एंड द मेथड नेम और लाइन नंबर उन्होंने बोला है लाइन नंबर 5। तो इस लाइन पर आपको एक, अभी मतलब ये कहाँ से प्रिंट हुआ, ये किसने प्रिंट किया, ये क्यों प्रिंट हुआ, ये जो भी अभी कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, अभी जावा इज बीइंग रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it does not let program to go in uncontrolled in, तब ये प्रोग्राम को ऐसे अनकंट्रोल्ड तरीके से जाने नहीं, तो जावा also has control on that, it will not break the application itself। अभी यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है। एग्जाम्पल अभी आप बोल सकते हो प्रोग्राम स्टॉप हो गया, प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड, बट इट हैज नॉट गॉट इनटू अनकंट्रोल्ड मैनर। जैसे कोई अभी एक्सीडेंट, दैट इज एन एक्सेप्शन हैज ऑकर्ड। अभी उस केस में क्या हो सकता है, प्रोग्राम एयर बैग्स खुल गई, गाड़ी रुक गई या ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ईबीएस से जो भी है। सो प्रोग्राम हैज स्टॉप, प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टॉप, बट वहां पर क्या हुआ, ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया या पावर बैग्स ओपन हो गई या एयर बैग्स आपकी ओपन, वॉट एवर इट इज। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, द प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड, द प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड। So at this line number 5, whatever the problem is, Java has already identified the problematic situation. So problematic situation is someone is trying to divide by 0. So this problematic situation Java has identified. Java जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, तो जावा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि देर इज अ सिचुएशन, problematic situation. What is the problematic situation? Someone is trying to divide by 0. And Java has already created a corresponding class for that situation. What is that problematic situation corresponding class? Arithmetic exception. The arithmetic exception is the corresponding class for that. And what happened just now? First one is identification of problem. And Java has identified the problem that this is a problem of dividing by 0. So what happens this line? So Java creates one exception, one object. इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा क्या करता है, इस क्लास, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। which class का ऑब्जेक्ट? it will create an object and that object will contain all the information whatever you see on the screen।
What is the problem? Where it has occurred? What line? What package? What class? What method? What was the problem? It has everything in that particular object. So if you see on the console, what is the information? And plus there is lot of other information is there with that problematic situation. So everything is stored in that particular object. Now कौन से class का object बना होगा? Corresponding problematic situation class का. मतलब यहाँ पर object किस class का बना होगा? In short, arithmetic exception class का object बना है. क्या हुआ है? Arithmetic exception class का object बना है और ये object अभी object is created, not only object is created, now this object is now given to JRE. तो JRE क्या करता है? इस object को देता है corresponding exception handler. मतलब उसको पता चला कि there is a problem. Now next step is who is going to handle this? Is there any handler developer provided? अभी ऐसा problem किसकी वजह से आया है? डेवलपर. तो वो पहले चेक करेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई हैंडल करने वाला है या नहीं. अगर कोई हैंडलर नहीं है देन व्हाट हैपेंस? दैट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज गिवन टू अ हैंडलर. व्हाट इज दैट हैंडलर? Default exception handler, which is provided by that exception object is given to default exception handler provided by Java. And that default exception handler, what it does? Well, it prints the exception details and terminate the program or terminate the program. That's it. What is the job of default exception handler? Terminate the program, print the exception details and stop the program. That is the default exception handling. ये भी आपको पूछा जा सकता है. So this default exception handling is managed by JVM, and what it does, it takes the following steps when the exception occurs. The JVM checks whether the exception has been caught by appropriate exception handler block. It means it checks is there any exception handler provided. If it is, then the exception is handled by that particular handler. Else, if the exception, the method where the exception occurred does not handle this type of exception, the method returns abnormally, abruptly, and JVM tries to find a handler in the method that could handle the current method. It continues the process of the call stack and a lot of things. So I will simply say what happens. Default exception handling. Exception handler. What happens default exception handling? The first of all, problems identification. So whenever there is an exception occur, then exception Java creates the exception class of exception class object and gives that to JRE, and JRE checks for the available handler. If it is no other, is no handler provided, then it will be handled to will be hand over to default. What is the job of default exception handler? What default exception handler does? Default exception handler prints the exception details and terminates the program. Default exception terminate the. Here getting the idea? This is the default exception handling. क्या करता है? बहुत सिंपल है, इफ एल्स जैसा लॉजिक है. कोई प्रॉब्लम में इश्यू आ गया, now there is a problem. Okay, now what happens? Identification of problem done, and the exception object is happens. Exception object is created.
Now this exception object is given to JRE. So JRE will check available handler. Is there any handler? If it is not so, then this will be given to default exception. What default exception handler does? Will print exception details and terminate. That's it. वो खुद कर लेता है. That program is already written. That thing is already taken. Okay? मतलब ये क्वेश्चन है कि उसको कैसे पता चलेगा हु इज द हैंडलर, राइट? अभी के लिए हमने कुछ दिया नहीं तो उसके पास एक ही हैंडलर, क्या है उसका? डिफॉल्ट एक्सेप्शन. डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का एक ही काम है, करो टर्मिनेट. क्लियर है? ठीक. आई थिंक वी आर गुड. Now, next is what are the different ways to handle exception? There are two ways, using try catch and using throws keyword. So, how to handle exceptions using try catch? This is a question we will be looking for now. We will just, can you tell me how to handle exception using try catch? How to handle exception using try catch? आप पता है हैंडल कैसे करेंगे यूजिंग ट्राई कैच, बट कैसे हैंडल करोगे आप? हाउ आर यू गोइंग टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर तो सोल्यूशन दो. पहला प्रोसेस होगा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. तो हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल द, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? तो हु इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? जावा आइडेंटिफाई कर लेगा. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन विल बी डन बाय जावा. कैसे समझ में आएगा? उसको अवेलेबल लिस्ट ऑफ क्लासेस है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझ में आता है कि ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा है उसको हैंडल करना. फिक्स सेट. पहले तो प्रॉब्लम समझ में आया, फिर वो हैंडल करने के लिए आप क्या कर रहे हो उसके. तो यू हैव टू राइट हैंडलर्स. हाउ टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. उसको हैंडल करने के लिए कौन लॉजिक लिख, हम ही लिखने वाले. गलती किस, हम. हैंडल कौन करेंगे? हम. तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि लगी कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करने का ट्राई कर रहा है. ट्राई किया उसने, ऑब्वियसली ट्राई किया, अभी प्रॉब्लम हो गया. अभी उसको क्या क्या फिक्स करो, कि रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट, क्या फिक्स करोगे आप? तो व्हाट आर यू गोइंग टू प्रोवाइड द फिक्स? So we have to provide the fix. So we have to provide the handling logic. How are you going to handle the exception? तो क्या होना चाहिए फिर? उसको हैंडलिंग क्या करोगे आप? आप वहां पर कुछ अल्टरनेट कोड दे सकते हो. बोल सकते हो कि भाई आपने इनवैलिड नंबर दी, आप कोई और नंबर दे दो. ऐसे बोल सकते हो. और फिर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल. तो व्हाट वी डू, को लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है, आ सकता है ना ये. तो उसको आप क्या करते हो? ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब 100% गारंटी नहीं कि प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आ सकता है. तो इफ यू थिंक दैट देयर माइट बी प्रॉब्लम इन सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कोड, उस पार्ट को आप लिखते हो ट्राई के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन्वॉल्व करो, फिर उसको लिखो ट्राई. सो नाउ व्हेन यू राइट दैट कोड इनसाइड द ट्राई, पहला क्या है? राइट द कोड which you think is might generate exception or might generate some kind of problem. तो ऐसे कोड को आप लिखो लाइक दिस, ट्राई. अभी जैसे आप ट्राई लिखते हो, ट्राई का मतलब होता है नाउ दिस कोड इज अंडर स्कैनिंग, is code under observation. If there is any exception, what will happen? If there is any problematic situation, exception object will be created and that object will be given to JRE. Now JRE has to find out who is the handler. अभी आपने पहला काम तो कर लिया, आइडेंटिफिकेशन. दूसरा काम क्या है? उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या फिक्स दो. उसको फिक्स देने के लिए आप लिखते हो कैच. तो मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जनरेट होने वाला है. यहाँ पर दिस ऑब्जेक्ट विल बी गिवन टू JRE. नाउ JRE इज गोइंग टू फाइंड आउट द हैंडलर. अभी हम हैंडलर लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं हम? हैंडलर. सो कैच लिख रहे हैं, मतलब हम क्या लिख रहे हैं? हैंडलर. तो JRE आपको ऑब्जेक्ट भी दे देगा. तो ऑब्जेक्ट विल बी आल्सो गिवन टू हैंडलर. हैंडलर आल्सो गिव द
ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर जेआरई के पास आया, तो जेआरई उस ऑब्जेक्ट को किसके पास देने वाला है? हैंडलर के पास। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हैंडलर। तो यहाँ पर हैंडलर देगा और वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ जाएगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और ये हमने क्या लिखा अभी? हैंडलर। यहाँ पर आपको जो चाहिए मर्जी आप कोड लिख सकते हो, उसको बोल सकते हो यूजर को आपने इनवैलिड डिनोमिनेटर दे दिया, इनवैलिड इनपुट दे दिया, और आप प्रिंट कर सकते हो व्हाट वाज द इशू, या उसको आप और भी कुछ जो भी लॉजिक लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ आपका? दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट हैंडलर। व्हाट इज दिस? दिस इज कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर। क्या है? कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर। कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर। अब मुझे बताओ, आपके प्रोग्राम में एक ही प्रॉब्लम आने वाला है, मल्टीपल आने वाले? एक आने वाले, मल्टीपल? अगर आपने 10 लाइनें लिखी तो 10 लाइन पे हर एक लाइन पे इशू आ सकता है। तो यू हैव टू राइट सेपरेट हैंडलर फॉर ईच ऑफ द प्रॉब्लम यू माइट फेस। मतलब सारे प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन तो नहीं चलेगा ना। तो यू माइट हैव डिफरेंट 10 प्रॉब्लम्स, तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यू हैव टू राइट 10 डिफरेंट fixes also. So for corresponding problem or problem corresponding exception, you have to write a corresponding separate catch block also. So you might write one try, उस try के अंदर आप एक दो चार जितने चाहिए स्टेटमेंट्स लिखो, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट लिखो जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है। तो वो सारा एक्सेप्शन प्रोन कोड आप लिखते हो ट्राई के अंदर, और जैसे ही एक्सेप्शन आता है उसको करस्पॉन्डिंग कंट्रोल दिया जाता है हैंडलर के पास। अगर 10 लाइनें लिखी हो तो 10 लाइन पे आपको चेक करना है कि इसमें क्या इशू आ सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। तो विल फर्दर ड्रिल डाउन दिस टुमारो। टुमारो वी हैव टू सी दिस थिंग ओनली, ट्राई कैच फाइनली। 3 ही कीवर्ड देखना है हमें, ट्राई कैच फाइनली। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थ्रो और थ्रोज देखेंगे, टाइम मिलता है तो। एंड दैट इज एंड ऑफ योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके।